वॉइस चेक कर दीजिए बेटा। एक बार आवाज कंफर्मेशन कर दीजिए। आवाज क्लियर है? गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हो? अब सब लोग तैयार है सेशन के लिए? वेलकम वेलकम टू ऑल लाइव स्टूडेंट्स। जितने लोग सेशन में हैं एक बार मुझे हैश रेडी दिखाइए सो दैट आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सेशन रेडी करेंगे हम। आज का सेशन में हम एनर्जी मीटर डिस्कस करने वाला है। लास्ट क्लास में हमने डायनेमोमीटर पर डिस्कस किया, डायनेमोमीटर पर सम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया है। चलो चलो, प्लीज ऑल ऑफ यू शो मी द थम्स अप एंड प्लीज ऑल ऑफ यू शो मी द hash ready so that we can start the session, my dear. फटाफट चलो माय डियर, आज का कंटेंट है। लास्ट क्लास में हमने कुछ डीपीपी लिया है। सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक शिवम जी इज पोस्टेड सम डाउट्स इन डीपीपी, so we'll complete those doubts first and doubts के बाद immediately हमने start करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कहा स्टॉप हो गया, वाट मीटर पर स्टॉप हो गया, वहां से थोड़ा सा फॉर्मूलास लेके देन वी विल स्टार्ट द एनर्जी मीटर। ओके, चलो चलो चलो। सो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। आई थिंक दिस वाज सम क्वेश्चन आस्क्ड in your DPP1. The power in a three-phase, three-wire load is measured using 200 watts full-scale wattmeters W1 and W2. W1 is of accuracy class plus or minus 1% and reads 100 watts. W2 is of accuracy class plus or minus 0.5% and reads 50 watts, minus 50 watts. Find the uncertainty in the computation of total power. Chalo, what is the answer, my dear? How many of you have done this question? See, don't use the cross charting. Please try to involve in the class and try to do this question. Fatafat. Sir, कल का DPP नहीं मिला. Okay. मैं अपलोड करता हूँ। मैं already I have given the DPP. I will ask the students. I will ask the SMEs. Okay. I will ask the SMEs to upload it. If anything is problem it, I will let you know. Chalo, my dear. So what is the answer? Shivam ji, I think what is the problem that you have faced? Okay. Pratik sir. Okay. Any newcomers here? जितने लोग सेशन को लाइक करें एक बार सेशन को लाइक कर दो बेटा and try to forward this session to maximum number of people and try to involve in the classroom. See here, the power in a three-phase, three-wire load is measured 200 watts full scale. So there are two wattmeters. This is wattmeter 1 and this is wattmeter 2. And the full scale value here is 100 watts. And here also full scale value कितना है? 100 watts है. And W1 is accuracy class plus or minus 1%. I told you class means guaranteed accuracy error. So guaranteed accuracy error, when he has given the class means it is related to full scale value. So guaranteed accuracy error is 1% of full scale value. And W2 is guaranteed accuracy error of how much? Plus or minus 0.5%. Okay. Plus or minus 0.5% of full scale value. So first of all, please calculate the limiting error with 1% of full scale value means how much? That is 1 by 100 of full scale value 100. So the absolute value is 1. So this is the limiting error.
Okay na? Next, plus or minus 0.5% of full scale value, my dear. So that is 0.5 by 100 into full scale value. Full scale value is equal to 100. So you are going to get 0.5 as the absolute value. Now by using this particular meters, what he is measuring beta? He is measuring what? The first meter reads how much? The first meter reads 100 watts. The first meter reads 100 watts and the second meter reads minus 50 watts. Second meter reading is minus 50 watts. That means the dial is calibrated in negative. So it is possible because yesterday's class I will show it how it is possible, W2, and this is situation limiting error is equal to 1, limiting error is equal to 0.5. Now this is what 100 watts. Now for a measurement of, okay, I will go for the next slide. So wattmeter 1 limiting error is equal to 1, percentage of limiting error for measurement of how much? By using the first wattmeter, how much reading you are measuring? 100 watts. So this will be for a measurement of 100 watts is dash. So if you do that, so percentage of limiting error is equal to 1 by 100 into 100. So that means it is a 1% percentage of limiting error. Next, wattmeter 2, the limiting error is how much, my dear? कितना आ गया? Limiting error 0.5 आ चुका है. So limiting error 0.5 है, my dear. So percentage of limiting error for measurement of how many watts? For measurement of 50 watts is showing as 50 watts. So that is a 50 watts. So that will be what? Percentage of limiting error कितना होगा? 50 watts divided by, sorry, we are limiting the error, so 0.5 divided by 50 into 100. So it is also going to become 1 na? Yes, it is also going to become 1%. Am I right? 5 by 100, so it is going to 1%. So now what is the question asked? Find the uncertainty in the computation of total power. Total power is equal to what, my dear? Total power is equal to what? Total power is equal to W1 plus W2 na. So it is a sum of quantities. So sum of quantities means their absolute errors must be added. Yes or not? Yes or not, my dear? जितने लोग हैं क्लास में, मुझे सेशन को लाइक कर दीजिए. बेटा बोल रहा हूँ बेटा. Okay, I will tell you. Actually yesterday you were asking in a different aspect, so I was not able to connect. Today I will show you how it is going to come negative. Okay, Divedi, शिवम जी क्लियर है? So what is the absolute error? So absolute error कितना होगा? So this is a 1% of what? 1% of, तो अगर absolute error चाहिए, this is a percentage of limiting error. So absolute error of W1 कितना होगा? 1% of how much measurement it is? Okay. Absolute error कितना होगा? 1% of 100 volts. So 1 by 100 into 100, so that will become 1. Okay, and this absolute error कितना होगा? That is nothing but absolute error of W2 कितना होगा? That is nothing but 0.5 only na. So that is 1 by 100 of 50 watts. So that is going to become 0.5. Okay, so what is the W1 reading? W1 reading is 100, W2 reading is minus 50. So, and what is their absolute errors? Their absolute errors must be added. So 1 plus 0.5. That means it's going to become 50 plus or minus 1.5. But remember, in the question, if you see the options, all the options are given in percentage. All the options are given in percentage, मेरे दोस्तों. समझ रहे हैं आपको?
सम ऑफ क्वांटिटीज में ऐसा होता है. ऑल ऑफ यू गॉट इट? इज इट क्लियर अप टू नाउ? इज इट क्लियर माय डियर? समझ में आपको सब लोगों को? एनी डाउट्स हैं? फर्स्ट इसने क्या दिया है, 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू, लिमिटिंग एरर आ गया 1, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू. सो दिस two absolute values must be added. For W1 plus W2 what happened, these absolute values must be added, 1.5 आएगा. So the result कितना होगा my dear? Result कितना होगा? 50 plus or minus 1.5 होगा. So 50 plus or minus 1.5 is the absolute. इसको परसेंटेज में कैसा करना है? 50 में कितना परसेंटेज is equal to 1.5 my dear. So if you do that simplification कितना आएगा आपको? कैलकुलेट कर लो. 150 by 50, so 3% आएगा. You understand? So the right answer goes to 3% my dear. Is it clear? शिवम जी, standard deviation formula लगे ना? Why you are using the standard deviation? He has not expressed the uncertainty is expressed in standard deviation. अगर uncertainty is expressed in standard deviation, then you have to go for the standard deviation problem. He has not clearly mentioned that uncertainty is expressed in what way. शिवम जी क्लियर है? समझ में आपको कोई डाउट है? जितने लोग जेन्युइन से डीपीपी को फॉलो कर रहे, जितने लोग जेन्युइन से डीपीपी को प्रैक्टिस कर रहे, उस लोगों को ये पता होगा ये प्रॉब्लम का ट्विस्ट क्या है. तब आंसर कितना आ गया? 3% आ चुका है मुझे. तो द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन डी माय डियर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Please go through this question. Any doubts you can ask me. Yes sir, not? जी सर, थैंक यू. फटाफट टाइम वेस्ट मत करना बेटा. मैं ऑलरेडी एवरी सेशन में मैं वही बात कर रहा हूं. मेरा सेशन जो कुछ है, मेरा टाइम वैल्यूएबल है, आपका टाइम भी वैल्यूएबल है. हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 सेशंस में इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. डे 1 से शुरू होके अब तक हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे, एक एक कॉन्सेप्ट के नीचे. एंड अगेन वी आर डिस्कसिंग मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. Dear Shivam ji, standard deviation or uncertainty, if he expresses the uncertainty in terms of the standard deviation, see, error can be expressed in different ways my dear. Error can be expressed in terms of absolute error, error can be expressed in terms of the limiting error, percentage of limiting error, error can be expressed in terms of the standard deviation, error can be expressed in terms of the variance. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा uncertainty in terms of standard deviation, अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस, देन आपने अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. क्लियर हो गया? जी है? हाँ, याद रहेगा. चलो ये क्वेश्चन नंबर कितना है शिवम जी? ये क्वेश्चन नंबर बताओ ना. आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस क्वेश्चन नंबर 7 डीपीपी 1 में है ना ये क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम डीपीपी 1. डीपीपी 1 में क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर का एक बार बताओ ना. क्वेश्चन नंबर 7 समथिंग. डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर कितना है ये? फास्ट. क्वेश्चन नंबर 1 डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9. ओके तो क्वेश्चन नंबर 9. ओके चलो, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Please try to make out this question. This is I think DPP 2, I think so. This is from DPP 2. Question number आप पता है? What is the answer? well, 5 minutes కూడా నిల్చోలేకపోతున్నానే. ఒక పని చేస్తావా? ఫ్యాన్ వేస్తా, ఫ్యాన్ వేస్తే సౌండ్ వస్తుంది. రాదు, అది చేయించాలి. రేపు చేయిద్దాం ఖచ్చితంగా. చార్జర్ కోసం వచ్చిన. It is a MSQ actually. Dear aspirant, it is a MSQ.
इट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस माय डियर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, या मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। चलो ACD इज गिवन आंसर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। So if you see the moving iron instrument, my dear, the point to be remembered in moving iron instrument, the moving iron instrument में here the MI moving iron instrument में the deflection torque is given by I square by 2. The deflection torque is given by 1 by 2 into I square dl by d theta, my dear. Deflection torque में is equal to 1 by 2 into I square dl by d theta. Of course, this is a deflection torque. So if you see this, this is not related to only certain polarity. So it can be positive or negative both. So it is an unpolarized meter. We cannot declare the polarity. We cannot declare the polarity, my dear, because it is going to take the I square. Again, आपका करंट नेगेटिव है, सपोज आपका करंट नेगेटिव है, लेकिन आपने एक्सप्रेशन में हाफ आई स्क्वायर डीएल बाई डी थीटा ले रहे, तो जो कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है वो पॉजिटिव करंट के लिए आ रहा है, नेगेटिव करंट के लिए आ रहा है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने डायरेक्टली आई स्क्वायर ले रहे। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन ए इज राइट, इट इज एन अनपोलराइज्ड मीटर। इज इट क्लियर माय डियर? हाँ, इज इट क्लियर? परफेक्ट। नेक्स्ट, it has a permanent magnet? No, this does not have a permanent magnet, it has a electromagnet. Moving iron instrument is having electromagnet, but it is having the moving disc. So there are two vanes, two discs, one is the attractive type and repulsive type. Moving iron is available attractive type moving iron in moving vein, attractive type moving vein हो सकता है, and रिपल्सिव टाइप मूविंग वेन भी हो सकता है। एक कंस्ट्रक्शनल फीचर का क्वेश्चन है, रिपल्सिव टाइप मूविंग वेन भी हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो राइट। इट हैज अ फिक्स्ड कॉइल, यस इट हैज अ फिक्स्ड कॉइल, दैट इज व्हाट द एयर कोर्ड कॉइल। सो ऑप्शन ए, सी, डी आर राइट आंसर्स, ए कामा सी कामा डी, सो दीज आर राइट आंसर्स माय डियर। इट हैज एन अनपोलराइज्ड मीटर, इट हैज अ फिक्स्ड कॉइल, इट हैज टू आयरन वेन्स। इज इट क्लियर मेरे दोस्तों? फटाफट जितने लोग सेशन को देख रहे हैं मुझे एक बार थम्स अप दिखाइए बेटा। 26 पीपल आर देयर, 26 पीपल मस्ट इन्वॉल्व। आप सब लोग आपका पेपर, पेन, कैलकुलेटर से यहां रखना है। मैं आज का टॉपिक यहां शुरुआत नहीं किया हूं, आई एम जस्ट स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट टाइम इन द सेशन, एवरी डे सेशन, आपका डाउट्स के लिए। मैं इतना सीरियस हूं क्योंकि मैंने एक बार वादा किया आपका डीपीपी का डाउट जो कुछ है मैं सॉल्व करता हूं, क्योंकि डीपीपी के लिए मैं पूरा अटेम्प्ट किया। डीपीपी का जो कुछ डाउट्स है मैं चेक कर रहा हूं डेली, एंड आई एम एवरी डे अटेम्प्टिंग द डीपीपी 2 to 3 times, आई एम वेरीफाइंग। ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट द टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? दिस इज आल्सो फ्रॉम डीपीपी 2। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, इट्स एक्चुअली अ मॉडल गेट क्वेश्चन। एक इसका मॉडल एक बार गेट में आ चुका है। एक्सेलेंट, थैंक यू। आंसर बताइए जल्दी। फिर एनी डाउट्स है आपको? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स? Still, if anybody is having any doubts, you can ask me. जितने लोग डीपीपी को फॉलो कर रहे, अंजलि कुमार, प्रतीक शर्मा, आपको कोई डाउट्स है तो इधर पोस्ट कर सकते फटाफट।
Still, if anybody is having any doubts. करंट सेंसिटिविटी होता है क्या? चलो, this is a different scenario, my dear. DPP2 done. Okay, I will check tomorrow. Everybody should, जो जितने लोग सेशन को अटेंड कर रहे, yes, listen. Tomorrow I will verify how many of you are attending this particular session. Tomorrow I will ask everybody should come with a ready message. सर इतना सॉल्व किया हूं मैं, इसमें इतना डाउट्स आ गया, I have solved some 10 problems, I have solved 8 problems, मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है. I am expecting that from you. Okay, please show the thumbs up tomorrow. You should not miss it. Tomorrow everybody whoever comes to my live class, क्योंकि थोड़ा एक्सरसाइज करके आना है बेटा, थोड़ा होमवर्क करके आना है. हम रोज रात 8:30 to 10:30 और 8:30 to 11 o'clock आपके लिए टाइम स्पेंड करें. आप एक आधा घंटा स्पेंड करें तो वो टॉपिक आपको माइंड में फिक्स हो जाता, उसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आता. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट माय डियर शिवम, प्रतीक शर्मा, द्विवेदी and Juhi Chawla, everybody I'm telling, it's not compulsory that every topic of GATE topic you cannot cover in the 2 months. But whatever we are discussing here, these are the most repetitively asked questions, my dear. अगर ये concepts आपको clear है, इतना छोटा टाइम में, इतना लेस टाइम में, आपको 5 दिन और 6 सेशंस में आपको ऑलमोस्ट 60% का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको एक परिचय होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा. हाँ जो ही, चलो. What is the series resistance required to extend the 0 to 10 volts range? See, there is a voltmeter. This is a very interesting question. 0 to 10 volts. Okay, and 100 ohms per volt. These are, my dear students, 100 ohms per volt. What is this? This is actually, it is another way of sensitivity expression. Okay na? So it is called not deflection sensitivity. It is what we call as, it is not deflection sensitivity, Shivamji. It is called sensitivity. That's it. But what is the meaning of it? It shows that for 1 volt representation, it offers a resistance of 100 ohms. The meter resistance is 100 ohms. This was, I was talking yesterday. Yesterday, when I was talking, the sensitivity, another way of expression. अगर आपको सेंसिटिविटी अच्छा होना बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना है. अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होए तो उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा. अगर आप एक वोल्ट का वोल्टेज दिखाना चाहते हो, ये यूजिंग वोल्ट मीटर, आपके पास 100 ओम्स का कॉइल रेसिस्टेंस होना है. इज इट क्लियर माय डियर? 100 ओम्स का कॉइल रेसिस्टेंस होना है. ये हु इज दिस फेलो क्रिकेट लवर सर, ईसी में अनलॉक कब का स्टार्ट कर रहे हो? Please, these people should have minimum sense. Okay, minimum sense. So 1 volt 100 ohms है. शिवम जी ध्यान से देखो, ये what is the meaning of this 100 ohms per volt? उसका मतलब क्या है? अगर उसका इनवर्स करो, if you take the inverse of this, what happens? 1/100 ohms per volt. That means 0.01 volt per ohm. Volt per ohm means it is ampere current. So this is what we call as full scale deflection current, my dear. This is what we call full scale deflection current. That means the current which required to pass through that voltmeter to give the maximum value. अगर आपका maximum value 10 volts है तो मुझे 10 volts दिखाने के लिए 0.01 amperes का करंट चाहिए. That is the internal meaning of this particular factor. लेकिन ये 10 वोल्ट्स दिखाने के लिए आपके पास 0.01 एम्पियर आने के लिए मीटर का रेसिस्टेंस कितना होना है? मीटर का रेसिस्टेंस 100 ओम्स होना है. अब तक क्लियर है? अप टू दिस इज इट क्लियर माय डियर?
So if you see the units 100 ohms per volt, if I am taking the inverse of that particular sensitivity, we can call this also sensitivity factor, but it is not deflection sensitivity. It's another way of expressing the sensitivity. Sensitivity is equal to 100 ohms per volt. अगर inverse of sensitivity देखें तो हमको क्या आएगा 1/100 ohms per volt, that integrate 0.01 volt per ohm. बेटा volt per ohm बोलो तो एम्पियर, उसका मतलब क्या है? अगर मैं ए वोल्टमीटर यूज करके, विच वोल्टमीटर? द वोल्टमीटर विच इज हैविंग 100 ohms पर वोल्टेज फैक्टर, दैट वोल्टमीटर यूज करे तो मुझे फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 वोल्ट्स दिखाने के लिए मुझे कितना करंट चाहिए? कितना करंट चाहिए? 0.01 एम्पियर करंट चाहिए. लेकिन दिस ऑल इज गोइंग टू हैपन इफ एंड ओनली इफ 100 ohms is the minimum requirement for 1 volt. But actually your full scale value कितना है? 10 volts. So for 1 volts 100 ohms बोलो तो for 10 volts what is the resistance my dear? For 10 volts this is the 1000 ohms. So this is going to be the meter resistance my dear. अभी clear है? Do you understand my dear? Everybody 1 volt के लिए 100 ohms बोलो तो 10 volts के लिए कितना होगा? 1000 ohms हो गया. तो मीटर का रेसिस्टेंस 1000 ohms आ गया. तो मीटर का रेसिस्टेंस मिल गया. Now we have to go for the diagram of voltmeter. So let me go for the voltmeter diagram my dear. So this is हमारा volt, this is IM and this is our RM. So we are going to attach a series resistance my dear to convert the voltmeter na. So this is the series resistance. So now if you see the voltage across this, the voltage across this particular voltage is Vm my dear, and if you see this voltage, this particular voltage is the capital V my dear. This particular voltage is the capital V. Now what is the data given? एक बार देखो. What is the series resistance required to extend the 0 to 10 volts range? That means the Vm maximum is how much? 10 volts range of 100 ohms per voltmeter. उसका मीटर रेजिस्टेंस कितना है? This is a 1000 ohms. This is the 1000 ohms, and the meter to 0 to 1000 volts. That means V is equal to how much? 1000 volts. तो क्वेश्चन पूछ रहा है सीरीज रेजिस्टेंस. तो हमारे पास फॉर्मूला है सीरीज रेजिस्टेंस का. तो व्हाट इज द सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? RSC is equal to RM into M minus 1 my dear. So what is the M? M can be taken as small v by capital V minus 1. So what is the meter resistance? Meter resistance is 1000 and small v, sorry, capital V by small vm na, formula multiplication factor V by Vm. So capital V is how much? 1000. Small vm is equal to how much? 10 minus 1. So this is 99 kilo ohms is the right answer. So what is the answer? 99 kilo ohms. Very close answers are there. You must be clear. No idea. क्रिकेट लवर्स नो आइडिया बेटा. मुझे आइडिया, कुछ भी आइडिया नहीं है. ओके आपको आंसर मिल गया. आपको आंसर मिल गया. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास कब स्टार्ट होता है मुझे पर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं. ओके आपको आंसर मिल गया. यहां से आप निकल सकते. चलो ऑल ऑफ यू गॉट इट माय डियर. चलो 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 क्लियर हो गया डाउट्स? Shall we start the energy meter topic my dear? प्लीज मुझे थम्स अप दिखाइए जल्दी से जल्दी. थैंक यू थैंक यू. ये ट्रिपल आर का हिंदी है. ट्रिपल आर का हिंदी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा उर्दू, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा तेलुगु, थोड़ा सा साउथ इंडियन का फ्लेवर रहता है. ये बिरयानी है. बिरयानी में सब कुछ मिक्स होता है ना, सब सुपर क्वालिटी आइटम्स रहता है उसमें. एक नंबर 1 राइस रहता है, सादा सीधा राइस नहीं रहता है. नंबर 1 एकदम नंबर 1 राइस रहता है. उसको बोलते हैं हम बिरयानी राइस. बासमती राइस है, उसमें थोड़ा स्पाइसेस रहता है. एवरीथिंग ओके. सो साउथ बोलो तो मिक्सचर. चलो चलो चलो. मैं हैदराबाद से हूं बेटा.
मैं हैदराबाद से हूं, अभी तो मैं पांडिचेरी में हूं। चलो लेट अस स्टार्ट। या आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा फटाफट। ये आज का क्वेश्चन है आईआईटी खड़गपुर 2014 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले लास्ट क्लास हमने फॉर्मूलास लिखा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला माय डियर W1? प्लीज टेल मी। यस्टरडे हमने 4 फॉर्मूलास लिखा है। 4 formulas we have discussed my dear. Thank you 4 फॉर्मूला। चलो 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 प्लीज कम टू द क्लास मोड माय डियर। क्लास मोड में आ जाइए। लेट अस अवॉइड दिस थिंग्स, वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम। प्लीज कम इनटू द क्लास मोड। हाँ एक्सलेंट। हमने वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे 2 वाट मीटर मेथड, एम आई राइट? 2 वाट मीटर मेथड में हमने फॉर्मूलास क्या क्या डिस्कस किया, फटाफट बताइए। लास्ट क्लास में हमने 4 फार्मूलास डिराइव किया है 2 वाट मीटर मेथड से। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट फार्मूलास। यस वी आर वेरी गुड। फटाफट बोल रहे बाबा जल्दी। एवरीबडी शुड राइट ओवर देयर, एवरीबडी। जितने लोग लास्ट क्लास में हैं लाइव में, मैं इतना फेजर डायग्राम लिख के, फेजर डायग्राम पूरा दैट 5 एंगल 30 - 5 30 + 5 पूरा ड्रा किया आपके लिए। फटाफट बताइए बेटा। सो W1 का फॉर्मूला क्या है? W1 का फॉर्मूला है VL cos ऑफ 30 - 5 रे। हाँ ये फॉर्मूला नंबर 1 है। नेक्स्ट W2 क्या है? W2 इज इक्वल टू VL cos ऑफ 30 + 5 रे। बस नेक्स्ट नंबर 3 W1 - W2 कितना आ गया बेटा, जल्दी बताइए। तो आई थिंक दैट इज VL sin 5 ना, राइट? am I right or not? So this is equation number 3 है। नेक्स्ट W1 + W2 क्या आ गया हमको? √3 VL cos 5 आ गया। वेरी गुड। एंड 3/4 करे तो हमको क्या आ गया? 3/4 करे तो हमको क्या आ गया? sin 5 / cos 5 tan 5। सो tan 5 आ गया। सो tan 5 इज इक्वल टू √3 W1 - W2 by W1 + W2 आ गया। So these are the formulas list. These are the formulas list for the 2 watt meter method. मजा आ गया। एक बार प्लीज नोट डाउन ऑल दिस फॉर्मूलास। एक बार ये फॉर्मूलास को फिर प्रैक्टिस कर लो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। आई एम गिविंग 120 seconds ऑफ टाइम। प्लीज गो थ्रू दिस फॉर्मूलास। ये फॉर्मूलास फिक्स कर लो, माइंड लो। जितने लोग अभी सेशन को अभी फ्रेश में आ गया और जितने लोग कल का सेशन एब्सेंट है, फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये फॉर्मूलास को प्रैक्टिस कर लो, मगअप कर लो। 2 मिनट में मैं आ रहा हूं। దానికి టీవీ పెడతాన్నావు పెట్టు. ఏయ్ తను కూడా వండలే. వాటర్ బాటిల్ పెట్టకపోయినా ఇదే మాకు క్యాంపస్. అక్కడైతే మంచి అన్నిట్లో వస్తాయి. चलो डियर रेडी है? रेडी है बेटा? क्लियर है? आपका प्रिपरेशन अभी होना है बस। धोनी जी मजा आ गया? फटाफट रेडी है क्वेश्चंस के लिए? रेडी है? चलो हाँ एक बार देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन है ना tan 5। जस्ट आई वांट टू ऐड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। या तो
So if you see, we are having some important points here. Let us take one tabular column. I want to give some hints to you. मैं क्या कर रहा हूं देखो अभी. I am taking the relationship of the power factor and the readings of the wattmeters. Let us take this is the phi, this is the cos phi, this is the W1, this is the W2, these are remarks. Okay, so I will keep the name here as, I will give the name here as phi, and this one power factor cos phi, then the reading of W1, reading of W2, and these are the remarks. Okay, chalo. This is very very important beta. Pakka lock कर दो 100%. Okay, अभी ये साल का गेट एग्जाम में, this year gate exam, you are going to get one question on the 2 wattmeter method. If a question is coming on the 2 wattmeter method, ये टेबल से आएगा. Not only this gate exam, जितने एग्जाम्स लिखो आप 2 wattmeter method का पावर मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, then that will be from this particular table only. Now let us take first phi is equal to 0 degrees, my dear. फटाफट शिवम जी है, प्रतीक जी है, शुभम जी है, जूही चावला है, प्रीति जिंता है, दीपिका पडकुने है. हाँ बताइए cos phi कितना, फटाफट cos phi कितना होगा, पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर. हाँ अभी W1 का रीडिंग क्या होगा, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए. W1 का रीडिंग बताइए. आपको मैंने बोल दिया 2 मिनट्स का टाइम दिया, मैंने स्लाइड चेंज कर दिया, आपके पास फॉर्मूलास का लिस्ट होना है. अभी W1 का फॉर्मूला बताइए, W1 कितना आएगा. वेटिंग फॉर योर आंसर. मेरे को भूल गए, वही बोल रहा हूं मैंने. 30 एस्टरडे मैंने डांस करके बोला 30 - 5, 30 + 5, 30 - 5, 30 + 5. अरे जस्ट रिमेंबर भाई, 30 - 5, 30 + 5, उसको क्यों बोल गए आप. हाँ सर, ये कौन है, ये कौन है रे, ये कौन है रे, ये रे शौमत कहाँ से आया सर. ईएमएफ एंड वोल्टेज के बीच में डिफरेंस मुझे पता नहीं बेटा. अरे मुझे पता नहीं रे, आपको पता है तो मुझे बताओ ना. मुझे ईएमएफ का फुल फॉर्म भी पता नहीं है. W1 is equal to VL IL cos 30 - 5 रे. phi is equal to 0, cos 30 is equal to √3/2. सो ये क्या होगा, √3/2 VL IL होगा. हाँ ये क्या है, VL IL cos 30 + 5 है बेटा. phi is equal to 0, दैट बोलते ये क्या होगा, √3/2 VL IL. तो रिमार्क्स क्या है बेटा. हाँ रिमार्क्स क्या है वही बताइए. व्हाट इज द रिमार्क. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, स्टार मार्क कर दो. W1 is equal to W2. अभी याद आ गया. अभी क्वेश्चन में सपोज यूनिटी पावर फैक्टर दिया है भाई. यूनिटी पावर फैक्टर बोलो तो क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर बोलो तो क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर है तो रेसिस्टिव लोड है. अगर रेसिस्टिव लोड है तो पूरा कायर्स की बात नहीं है, पूरा V एंड I बोथ आर इन फेस. वाटमीटर 1 रीडिंग, वाटमीटर 2 रीडिंग सेम है. मजा आ गया. चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट. मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट. नाउ आई एम गोइंग फॉर phi is equal to some 30 degrees or phi is equal to 60 degrees. $30 लेंगे. We will take 30 degrees. फटाफट. If you take 30 degrees, cos phi कितना होगा, यूनिटी पावर फैक्टर. cos phi, cos 30 √3/2, 1.732/2, 0.866 होगा, 0.866. अभी बताइए W1 कितना होगा. VL IL cos of 30 - 5, 30 - 5, 30 - 30, cos 0 1. So this will become VL IL. Next this one, VL IL cos 30 + 5, 30 + 5, 30 + 30, 60. So this will become VL IL/2. What is the conclusion? What is the conclusion रे बाबा, बोल रे, बोलना पड़ेगा. One of the wattmeter reading is W2 is equal to half of the W1.
Sometimes, my dear student, sometimes this can be wattmeter 2, this can be wattmeter 1. That depends upon the connection. Sometimes you can connect R and B connection W2 and B and Y connection you can connect W1. ऐसा भी कर सकते हैं नीचे से. some लोग ऊपर से देखते, some लोग नीचे से देखते ना. So W1, W2, W1, W2 जो भी problem नहीं है. So what is the condition here? Remarks both are same. Both meters both same. For what condition? This one. W1 is equal to half of the W1 means one of wattmeter is half. Please note down, space nahi hai idhar. Okay, chalo next. चलो next. 30 के प्लेस में 60 कर लो फास्ट. 60 अभी कितना होगा? cos 60 मतलब 1/2, that means 0.5. हाँ इधर आगे VLIL cos 30 minus 5, 30 minus 60, 30 minus 60 means minus 30, cos of minus 30 means cos 30 means √3/2. So इसका आंसर है √3/2 VLIL. बताया होगा बस. नेक्स्ट 30 plus 5 बोलो तो 30 plus 60, 30 plus 60 बोलो तो 90, cos 90 0 फट. So one of the wattmeter reading is 0. Yes or not? W2 is equal to 0. One of the wattmeter reading, one meter reading is 1 meter is 0 reading. Yes or not? Next. मजा आ रहा है? चलो next. If I am taking 90 degrees, my dear, 90 degrees को कितना होगा? cos 90 0 होगा. cos 01 cos 91. हाँ बताइए W1 VLIL cos 30 minus 5, 30 minus 5 बोलो तो 30 minus 90, 30 minus 90 बोलो तो minus 60, cos of minus 60 बोलो तो cos 60.5. that means VLIL by 2 होगा. next 30 plus 90 बोलो तो 120, 30 plus 90 बोलो तो 120 बोलो तो कितना? cos 120 बोलो तो minus है ना. I think this is minus ना. am I right my dear? Yes. So clear है W2? जितने लोग क्लास को देख रहे हैं. प्रतीक शर्मा, W1 is equal to 2 W2 कैसा आ गया? Okay, W2 is equal to half of the W1. Very good. All of you, शिवम जी clear है? अभी one of the student was asking me, my dear, how negative wattmeter reading. This is a possibility. When you are going to get the negative wattmeter reading, one of the wattmeter is going to be getting negative for a 90 degrees phase shift. Okay, so this is W2 is equal to minus of W1. So this is 1 meter reading is negative. 1 meter is negative. First of all, here both are positive. Have you observed? Both the readings are positive here, my dear. Let me take some indication here. So here both are positive. Here one of the wattmeter is half, 1 meter is equal to 0, 1 meter is equal to negative. ये कैसा रिमेंबर करना है एग्जाम में? मुझे ये 0.5 will take as a reference. That is the reason why power factor 0.5 will be taken as reference. 0.5 के नीचे पावर फैक्टर कम होते जा रहे हैं, 0.5 के ऊपर पावर फैक्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं. 0.5 के ऊपर पावर फैक्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं बोले तो वो पूरा रेसिस्टिव टाइप लोड बन रहे हैं, एंड पावर फैक्टर के नीचे जा रहे बोले तो पूरा लोड इंडक्टिव लोड होते जा रहे. So if you take this 0.5 as reference, as a power factor is increasing, देखो power factor increasing क्या क्या हो रहा है, conclusions बताइए. So if you take the conclusions, my dear, one more line. If you take conclusions, if cos phi is equal to 0.5, that means the power factor is 0.5, then what is happening here? W1 and W2 both are one of the wattmeter. ये सही है ना पूरा? Everything is correct? Perfect na? Any mistake we are doing? Perfect. So if you do this, one of the wattmeter reading is 0. Please note down these conclusions. One reading is 0. That's it. And let us take case below, case above. So if the cos phi is equal to 0, power factor is equal to, if the power factor is equal to cos phi is equal to 0,
that means power factor is reducing. If power factor is reducing, then what happens? If power factor is reducing, what is happening? One of the wattmeter reading is negative. We are getting a negative wattmeter reading. Negative reading, one of the wattmeter reading is negative. Next, agar aapne, if you take the cos phi, is equal to 1 unity power factor, for unity power factor, both are equal, both are positive. W1 is equal to W2 and positive, my dear. Understood? Please make a note of this point. ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है. मजा आ गया? Everybody clear, my dear? This is for lagging power factor, my dear. This is for lagging power factor. The last class है क्या? Yes, tomorrow is the last class. I will try first. I will ask them if any possibility of extension, because other subjects are there for me. I have to teach the COA, computer organization and architecture for EC people, and the schedule is so tight and other subjects are waiting. Okay, so now all of you please note it down. Cos phi is equal to 1. All of you understood na? So this is the conclusion, my dear. आपको clarity आ गया ना सब लोगों को? Everybody got the clarity, my dear? Everybody got the clarity or not? बताइए जल्दी. चलो my dear, मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं अभी. चलो गो फॉर द क्वेश्चंस फटाफट. आप एग्जाम में अगर आप अच्छी तरफ से प्रैक्टिस किए तो डायरेक्टली ये कंक्लूजन्स रिमेंबर कर सकते हैं. आप ये कंक्लूजन्स रिमेंबर कर सकते हैं. सर मुझे कंक्लूजन्स में भूल गया, एग्जाम की हरी भरी में, टेंशन में, प्रेशर में, आई फॉरगॉट. ओके, शिवम को बहुत टेंशन रहता है. एवरीडे शिवम विल बी हैविंग टेंशन. ओके, अंडर स्ट्रेस, ऑलवेज मैनेजिंग 2 things at a time. So many things, many problems will be there for Shivam. So in that situation, Shivam will forget in the exam. जूही चावला था तो एग्जाम के पहले ही forget. And प्रतीक जी एग्जाम को देखते ही वो पूरा भूल जाते, पूरा माइंड में शून्य हो जाते. Okay, so in that situation also nothing to worry. In that situation also nothing to worry. I have given this. एक मंत्र दिया मैंने, ये मंत्र को आप आराम से प्रैक्टिस करो. इतना 5 फार्मूला दिया, 5 सूत्रों से आपको मार्क्स डेफिनेटली आपको मिलेगा. चलो मुझे पता नहीं आपको कैसा पता हो गया 2 गर्लफ्रेंड्स बोल के. चलो माय डियर, लेट अस गो फॉर द क्वेश्चंस. या ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. IIT खड़गपुर 2014 का क्वेश्चन है. विकास सोयंकर, दिस टाइम आपने रैंक तो लेना है. विकास सोयंकर, आई थिंक यू आर माय ओल्ड स्टूडेंट. विकास सोयंकर, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक फ्रॉम यू. चलो, पावर कंज्यूम्ड बाय a balanced 3-phase 3-wire load is measured by 2 wattmeter method. The first wattmeter reads twice that of the second. Then the load impedance angle in radians is dash. One of the wattmeter reading is twice of the other. One of the wattmeter readings twice of the other means one of the wattmeter is half of the other. One of the wattmeter is half of the other means definitely it is what? 3 power factors you can remember I told you. Reference 0.5. At reference 0.5, power factor 0.5, one of the wattmeter readings is equal to 0. And if unity power factor W1 is equal to W2, so kaha lena hai? One of the wattmeter reading means it should be positive. That means it is coming under 30 degrees. So cos 30 degrees is the answer. Am I right or not? Yes or not? 30 degrees is the answer na? Am I right or not? Yes. So phi is equal to 30 degrees, but बेटा उसने क्वेश्चन रेडियंस में पूछा है. So कितना करना है? 360 degrees is equal to 2 pi radians. So 1 degree is equal to pi by 180 radians. ऐसा नट 1 डिग्री इज इक्वल टू, सही है, पाई बाई 180 रेडियंस. तो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा?
So 30 into pi by 180, so that means it is pi by 6 radians. pi by 6 radians. तो इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया. देखो अभी बताओ, गेट के लिए इतना पूरा डेरिवेशंस प्रैक्टिस करना, इतना लेंथी चैप्टर है पावर मेजरमेंट. एक्चुअली स्पीकिंग 2 वाट मीटर में इतना लेंथी चैप्टर, लेकिन एग्जाम में क्या पूछ रहे बेटा, अगर आपने लास्ट 5 साल का, 10 साल का, 15 इयर्स का पेपर देखो तो मिनिमम टू मिनिमम आपका 2 वाट मीटर पर क्वेश्चंस जो कुछ आ गया है एग्जाम में, ऑल आर अराउंड दिस ओनली. गॉट इट? यस, विकास कुमार महतो. सर इज इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर कैन बी टिकेट टू फॉर ट्रिपल ई स्टूडेंट? अरे एवरी ईयर ऐसा हो रहा है, सब लोग डबल ई स्टूडेंट्स, ईसी स्टूडेंट्स आते हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर को लिखते हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे दे आर नॉट मच फास्टर देन डबल ई एंड ईसी स्टूडेंट्स, because double E and EC students are good in mathematics, double E and EC students are good in networks, double E and EC students are good in problematic. इंस्ट्रूमेंटेशन का बच्चों का पेपर लिखते हैं आप, आपको अच्छा रैंक आता है. इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चे आपको देख के ऐसा देखते हैं, अरे मेरा पेपर आप लिख गया, माई पेपर यू हैव रिटन, एंजॉय. बीटेक डबल ई करते, एमटेक इंस्ट्रूमेंटेशन करते, बीटेक ईसी करते, एमटेक कंट्रोल करते. अरे बीटेक डबल ई करे तो एमटेक क्या करना है? पावर सिस्टम्स करना है. बीटेक ईसी करे तो एमटेक क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है. बीटेक डबल ई करते, एमटेक इंस्ट्रूमेंटेशन को आते. बहुत अच्छा नहीं है रे. प्यार एक लड़की से हो गया, शादी और एक लड़की से. यस, अगर आपको जल्दी से जल्दी आईआईटी में जाना बोला तो इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर लिख सकते. जल्दी से जल्दी आप इंस्ट्रूमेंटेशन में लिख के आप जा सकते हो. ओके, बट आपका फैमिली, आपका पेपर, आपका सब्जेक्ट 4 साल जो कुछ कॉलेज में पढ़ लिया है उसके लिए क्या है? सर मुझे तो इसरो जाना है. अरे मुझे तो चंद्रयान जाना है रे. आप तो इसरो के बारे में सोच रहे, मैं मून के बारे में सोच रहा हूं. आई एम थिंकिंग टू गो टू द मून. मजा आ गया. चलो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन माय डियर. इधर गए रे, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है. बहुत सारा क्वेश्चन था इधर. अरे रे रे, एक सेकंड. या प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. परम सत्य करना पड़ता है सर. चलो. The circuit in figure is used to measure the power consumed by the load. Okay. The current coil, okay, इधर current coil है and the voltage coil भी है. बहुत अच्छा है. Have 0.02 ohms resistance and 1000 ohm resistance respectively. The measured power compared to the load power will be dash. अरे भाई मैं कल बताया इसको. Yesterday only I have discussed. What is this connection? First of all tell me. जल्दी से जल्दी 1 मिनट के अंदर आपसे मैं प्रॉब्लम को, आंसर को एक्सपेक्ट कर रहा हूं. व्हाट इज द कनेक्शन? दिस इज, मैं इधर से उधर देखने के अंतर मुझे आंसर चाहिए. 1 2 3 4 10 आंसर. MC connection, excellent. This is what connection? It is MC connection, excellent. This is a MC connection. MC connection में एरर कैसा निकलना? MC connection. So first of all, power consumed by the load. UPF means, UPF बोलो तो यूनिटी पावर फैक्टर. उत्तर प्रदेश फीमेल नहीं है. आजकल बच्चा ऐसा है, सर यूपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश का फीमेल. ऐसा नहीं है बेटा, ये यूपीएफ बोलो तो यूनिटी पावर फैक्टर बेटा. हाँ, शिवम को ऐसा ही आइडियाज आता है. शिवम तो पहले रहता है यही डाउट्स पूछने. सर यूपीएफ बोलो तो क्या है? सर उत्तर प्रदेश का फीमेल है. नहीं, यूनिटी पावर फैक्टर है. चलो. हाँ, लेकिन क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन डायरेक्टली वो पूछा, परसेंटेज में पूछा. परसेंटेज में पूछ लिया. परसेंटेज में बताओ कैसा करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कुछ डाटा दिया है, ट्रू पावर का तो ट्रू पावर क्या है? ट्रू वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू वैल्यू कितना है बेटा? ट्रू वैल्यू VL IL cos phi
This is VPC, ACC, pass 5, didn't. What is VPC here? 200 volts. Or VLI, sorry. Already we can have this formula, right? So what is the voltage across a load? Voltage across a load is given 200 volts. This is 200 volts. Current passing through the current coil, the same current passes the load, 20 amperes. Unity power factor, that is 1. So true power is 4000 watts. Bus. Next, what is the measurement value, my dear? Measurement value is true value plus power consumed due to current coil. So true value plus, that is current passing through the current coil into resistance of the current coil. True value is 4000. Current passing through the current coil दिया है 20 amperes. So 20 square. Resistance of the current coil कितना दिया है? 0.02 ohms. 0.02 ohms. This is 2 by, this is 400, this is 2 by 100. 4008 watts. अरे बताइए बेटा, this is the true value or measurement value? This is a measurement value. Percentage क्या होगा? Percentage is equal to measurement value minus true value by true value into 100. So this is how much? 4008 minus 4000 divided by 4000 into 100. कितना आ रहा है बेटा? जल्दी बताइए कैलसी यूज करके. प्रतीक शर्मा बहुत फास्ट है रे. 0.2% मोर श्योर. लॉक कर दे. 800 by 4000. 800 by 4000. Didn't. Answer. 8 by measurement value 4008 minus 4000 by true value. सही है ना? 4008 minus 4008. 8 by 800 by 4000. कितना आ रहा है? 2% आ रहा है. चलो 2% 0.2%. हाँ, that's what I'm telling. 0.2%. Okay. 0.2%. More or less, which is the right answer. 0.2% more or 0.2% less. हाँ, गलती करते हैं. शिवम जी, विकास जी, गलती करते हैं आपने. जल्दी से जल्दी ये देख के. हाँ, 0.2% खत्म. बी आर सी. हाँ, क्या हो गया भैया? बी आर सी. शिवम जी, हाँ, शिवम को मोर चाहिए. शिवम ऑलवेज एक्सपेक्ट्स मोर. 0.2% मोर. मजा आ गया. नाइस. चलो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस विल कंक्लूड द पावर मेजरमेंट. आज की टॉपिक है एनर्जी मेजरमेंट. आज हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी मेजरमेंट. फटाफट. जस्ट क्लियर है? एनर्जी है और फिर एनर्जेटिक. चल, एनर्जी मीटर इज अ डैश टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इट इज अ इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. बताओ. एनर्जी मीटर इज अ डैश टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इंडिकेटिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप. इंडिकेटिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप. इंडिकेटिंग टाइप बोलो तो पॉइंटर, बस प्रेजेंट वैल्यू दिखाता. पीएमएमसी, मूविंग आयरन, दीज ऑल आर इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स. केवल प्रेजेंट वैल्यू को दिखता है. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, टिन 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 वेव फॉर्म्स, सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट. इंटीग्रेटिंग बोलो तो क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ द वैल्यू.
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नंबर्स ऐड होते जा रहे, नंबर ऐड होते जा रहे। अरे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मीटर के बारे देखो 0002, रात को एसी ऑन करो, मॉर्निंग आके देखो 22 होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एनर्जी मीटर, दिस वाज आल्सो वेरी इजी बिट, समटाइम्स पूछता है एग्जाम में। हम इतना पढ़ के जाते हैं लेकिन थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बिट इज सुटेबल फॉर इंडक्टेंस मेजरमेंट। इतना बड़ा पढ़ाया आप, एनर्जी मीटर, पावर मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, इतना पढ़ाया, केवल एक ही क्वेश्चन आ गया, अरे which of the following bridges is suitable for inductance measurement? आंसर तो मैक्सवेल, बाबा मैक्सवेल खुश होगा। So integrating type instrument, it is going on accumulating the reading. So there is a recording, there is a register mechanism. So the register mechanism goes on adding the number of units taken by the meter. So it is a integrating type. So we know very well power is equal to energy per time. So अगर energy लेना है तो energy is equal to power into time. So this is VI cos phi into T, my dear. So this is the fundamental expression for the energy. So VI cos phi का units होता है watts and time का units होता है seconds. But if you divide this with 1000 and if you divide this with 60 into 60, then this will be converted to kilowatt hour. So this particular kilowatt hour को हम बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। That's what 1 unit. एक महीने होने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप चेक कर सकते हैं आपका घर का कितना यूनिट्स खर्च हो चुका है। Got it? 1 unit is equal to 1 kilowatt hour. The most fundamental question every year they are asking, most fundamental question, most expected question is kilowatt hour के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। मजा आ गया? चल। So now let us respect the instrument. Every time whenever I am starting the instrument, I am spending some time for the constructional features. मजा आया? So this is the energy meter diagram. एक बार देखो बेटा, शांत से प्रशांत चित्त रूप से एक बार डायग्राम को देखो। 1 मिनट टाइम दे रहा हूं मैंने, 1 मिनट 60 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। 60 सेकंड्स के बाद मैं पूछता हूं क्या नंबर ऑफ कॉइल्स कितना है, नंबर ऑफ मैग्नेट्स कितना है, क्या क्या मैकेनिज्म्स हो सकता है। प्लीज लिसन माय क्वेश्चन केयरफुली। व्हाट आर द नंबर ऑफ मैग्नेट्स वी हैव and what are the number of coils we have and where is the current coil? Please go through. I am giving a time of 90 seconds. Just go through the diagram. కాలా ఏ స్టూల్ పడ్డది, పరుపులు పెట్టేదా? ఓ పని చేద్దాం సుమా, ఓ పని చేద్దాం, ఆ స్టూల్ తీసేద్దాము, కింద పెట్టేద్దాం, ఏం కాదు, చాపేసి. चलो my dear, how many magnets are there here? How many magnets are there here? जल्दी बताइए, how many number of magnets you are able to see here? Yes, there are 3 magnets. One is the M-shaped magnet. This is the M-shaped magnet, and this is a C-shaped magnet, and this is a U-shaped magnet. There are 3 magnets. M-shaped magnet, for which coil is connected. If you see, for this the pressure coil is winded, yes or not? So here comes the pressure coil, my dear. तो हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए पावर एंड टाइम चाहिए, पावर के लिए VI cos phi चाहिए, V के लिए प्रेशर कॉइल चाहिए, करंट के लिए करंट कॉइल चाहिए। बस एक मैग्नेट को प्रेशर कॉइल लगाओ, एक मैग्नेट को करंट कॉइल लगाओ, बस। ओके, सो दिस इज
एम शेप मैग्नेट, एम शेप मैग्नेट के लिए क्या व्हाट कॉइल है, प्रेशर कॉइल अटैच। प्रेशर कॉइल बोलो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कॉइल बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, और एक मैग्नेट है नीचे, यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट को क्या है, करंट कॉइल कनेक्टेड है, तो दिस यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट के लिए क्या कनेक्टेड है, यू शेप मैग्नेट के लिए हमको क्या कनेक्टेड है, करंट कॉइल कनेक्टेड है, करंट कॉइल। तो फ्रॉम दिस आई एम गोइंग टू गेट वी आई cos phi, दैट्स इट। एंड और एक मैग्नेट है, दैट इज द ब्रेकिंग मैग्नेट, सी शेप मैग्नेट। तो दिस सी शेप मैग्नेट is the C shape magnet is the braking magnet, for which no coils are connected, my dear. For this no coils are connected, but it is a braking magnet. Okay, so fundamentally this contains what mechanisms? There are 4 mechanisms here. One is a driving mechanism, second thing is the torque mechanism, and the third thing is the braking mechanism, and the fourth thing is the registering or recording mechanism, registering mechanism. So there are 4 readings, 4 mechanisms. I think in brief थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे उसको, ओके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शनल फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंस्ट्रक्शनल फीचर्स नॉलेज यू कैन नॉट आंसर द एमएसक्यू क्वेश्चंस। सी हियर, there is a aluminum disc here, so this is a circular disc actually, so we have taken the cross sectional view. This is a disc here, this is a disc, you can take the disc like this, so here this is the disc, okay ना। ये डिस्क के ऊपर एक प्रेशर कॉइल एक्ट कर रहे हैं, डिस्क के नीचे करंट कॉइल एक्ट कर रहे हैं। so this is the total current, my dear, and this total current is split into 2 parts. This is a current passing through the pressure coil, and this is a current passing through the current coil. And because of this current coil, there is a possibility of flux from the bottom direction. So this flux is due to current coil, and ऊपर से क्या आ रहा है, pressure coil आ रहा है, and the voltage across this pressure coil is VPC, and the current is traveling like this. So ऊपर से नीचे pi PC act कर रहे हैं. All of you are getting, my dear students. So there is a flux acting from the top to bottom, and there is another flux acting from the bottom to top. ये दो flux के interaction की वजह से थोड़ा सा torque mechanism develop होने की chances है. All of you understood, my dear? Any doubts here? जितने लोग सेशन को देख रहे जिंदा है क्या, कोई है? तो गए सब लोग, कोई है? उठो उठो उठो, जूही चावला उठाओ, अपर्णा जी, प्रतीक शर्मा, हाँ थैंक यू राइट, एवरीबडी इज गुड, गुड अटेंशन। देयर इज अ डिस्क, डिस्क के ऊपर है, मजा आने की बात है, एक बार ध्यान से देखो बेटा। तो आई विल ऐड वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। So this is the aluminum disc. So this is a particular disc, my dear, aluminum disc. So ये aluminum disc से ऊपर से क्या क्या आ रहा है? तो फर्स्ट ऊपर से वोल्टेज अक्रॉस द प्रेशर कॉइल है, एंड इसमें करंट ड्यू टू प्रेशर कॉइल है, एंड दिस इज क्रिएटिंग फ्लक्स ड्यू टू प्रेशर कॉइल। am I right or not, my dear students? You understand? Flux due to pressure coil. और नीचे से क्या है, नीचे से फ्लक्स ड्यू टू करंट कॉइल है, एंड देयर इज ए करंट। दिस रीजन, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए एनर्जी मीटर का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5cc एंड ICC है, एंड रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, एंड व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर flux is alternating flux, when the alternating flux cuts this aluminum disc, then what happens? In this, there is going to become some induced voltage. Am I right or not, my dear? थोड़ा खो गया था। हाँ प्रतीक जी, अब उठो 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 उठो।
और 30 minutes, okay, 30 to 35 minutes. Excuse me. अब सब लोग ठंडे है ना उधर. I think you're all experiencing the coldness there, right, in your areas. आपको विंटर सीजन है उधर. थिंक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा, महाराष्ट्र, उधर बहुत ठंडा है. लेकिन इधर इधर इतने को इतना गर्मी है, बहुत टेम्परेचर है इधर, बहुत गर्मी है इधर. चेन्नई में है ना, विंटर नहीं रहता, केवल 2 सीजन रहता, एक बारिश एक समर. इधर बारिश दिखता आपको, समर दिखता, विंटर की बात ही नहीं है इधर. हाँ, विंटर की बात ही नहीं है इधर. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फाइंड द लवर्स हियर. अगर विंटर है तो लवर्स होगा, फिर कहाँ से आ गए लवर्स? इधर तो बारिश है, या तो गर्मी है. गर्मी में बारिश में कौन मेंटेन करते लवर का? वो दिक्कत होगा. शिवम तो बहुत एक्सपीरियंस कैंडिडेट है. शिवम तो 3 सीजन में 3. ओके चलो, वीपीसी, आईपीसी, 5पीसी है, FICC, ICC है. तो अभी क्या होगा, दिस पर्टिकुलर अल्यूमिनियम डिस्क के ऊपर ये फ्लक्स एक्ट हो रहा है. यू अंडरस्टैंड? सो व्हेन दिस फ्लक्स कट्स दिस पर्टिकुलर मेटल डिस्क, ये क्या होगा? व्हेन दिस फ्लक्स कट्स द मेटल डिस्क, क्या होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ engineering, basic concept of engineering, there is a rotating disc. Under the rotating disc, if there is a possibility, so try to understand, actually not a rotating disc, the metal disc. When a metal disc is kept under the magnetic field, there is a possibility of some induced EMF. So there is a possibility of induced EMF, and that induced EMF I am taking it as, EMF induced. EMF induced due to pressure coil, yes or not? And this particular thing is called as eddy EMF. हम क्या बोलते हैं उसको? Eddy EMF बोलते हैं. All of you understood, my dear? And actually speaking, this eddy EMF is going to create certain phi EPC. Am I right or not, my dear? Phi EPC. Eddy EMF, eddy flux. As per the Lenz's law, the reason for this is this. So this is the IEPC, eddy current and flux. So there is a eddy EMF is induced, and the eddy EMF causes the eddy current, and eddy current, when it is causes the magnetic flux. So this is the eddy magnetic flux, and this is the created one. This is the creator. The reason for the eddy flux is eddy current. The reason for eddy current is the eddy voltage. The reason for the eddy voltage is the flux due to pressure coil. Okay, my dear. So ध्यान से देखो. So there is a VPC, there is a IPC, and there is a 5PC. And because of this flux due to pressure coil in the aluminum disc, we are going to have what? There is a EEPC. And due to that, we are going to have a IEPC, my dear. Okay. And ये दोनों के बीच में क्या होगा? ये दोनों के बीच में opposite होगा as per the Lenz's law. So this is the creator, my dear. So this is the creator, and this is the created. So ये दोनों के बीच में opposition होगा. You understand, my dear? ये दोनों के बीच में ऑपोजिशन होगा. इज इट क्लियर और नॉट? यस, एडी करंट फिनोमिनन. मजा आ रहा है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सफिक्सेस, माय डियर. दिस सफिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सफिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड वाइस वर्सा एट द बॉटम. At the bottom there is a current passing through the current coil. This causes the flux in the current coil. Okay na? The flux in the current coil, what happens now? Opposite. Why? Because there is a flux happening in the bottom direction ना. So opposite में क्या हो रहा है? इसमें भी एक eddy voltage generate होगा, and this time this eddy voltage is due to current coil, and because of this eddy voltage there is a eddy current generate होगा. So this comes EECC, and here this is IECC. मजा आ गया?
So this eddy EMF due to current coil which also causes the eddy current due to current coil. मजा आ गया? अभी किसके बीच में ऑपोजिशन होता है? ये दोनों के बीच में ऑपोजिशन होगा my dear. Okay, but the most important point, if you see the direction of this eddy current इसके बीच में and 5 के बीच में, and if you see the direction of IEPC and 5cc के बीच में, there is a possibility of interactive force. That is going to be the reason for the deflection torque. डिफ्लेक्शन टॉर्क के लिए हमको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट का इंटरेक्शन चाहिए. डिफ्लेक्शन टॉर्क के लिए हमको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट का वर्सेस चाहिए. पीएमएमसी में बी वर्सेस आई, मूविंग आयरन में आई वर्सेस एल, डायनामोमीटर में आई वर्सेस एम, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में आई वर्सेस वी वर्सेस सी. मजा आ रहा है? once again I'm telling, पीएमएमसी में बी वर्सेस आई, मूविंग आयरन में आई वर्सेस एल सेल्फ इंडक्टेंस, डायनामोमीटर में आई वर्सेस एम म्यूचुअल इंडक्टेंस, इधर 5 वर्सेस करंट. बट ये दोनों के बीच में ऑपोजिशन है, लेकिन ये दोनों के बीच में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिव. ये दोनों के बीच में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टॉर्क डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ दिस टू. यू अंडरस्टैंड माय डियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है. So deflection torque 1 is due to 5pc and IECC. Deflection torque 2 is due to 5cc and IPC. Okay. So deflection torque. Listen dear students clearly. मजा आने की बात है. Deflection torque is due to what? 1. 5pc and IECC. 5pc and IECC. Deflection torque 2 is what? Deflection torque is 5cc and IEPC. मजा आ गया आपको? So the net deflection torque is TD1 minus TD2. Now उसका most important point, this is nothing but current, this is going to be voltage, and I am going to get cos phi. I need a cos phi also. We need the angle also between these two. We need an angle also between these two, my dear. That is a phi 1 and this is a phi 2. Theta 1 and theta 2. मजा आ गया? बिकॉज पावर के लिए, टॉर्क के लिए हमको एंगल भी चाहिए ना, वी आई cos phi है ना. हाँ, ये कैसा आएगा? इसके लिए मैंने फेजर डायग्राम निकाल दिया. यस्टरडे हमारा दोस्त शिवम जी बोल रहे हैं सर फेजर डायग्राम क्यों ड्रा कर रहे, घर से लेके आ जाओ. मैं अभी लेके आ गया, शिवम जी एक्सप्लेन करेगा. कुछ समझ में आ रहा है? किधर गए रे? आपने बोल दिया ना सर फेजर डायग्राम्स आप स्लाइड बनाओ सर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? फेजर डायग्राम के लिए इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे सर? फेजर डायग्राम आप खुद से पीपीटी बना लो सर. मैं बना लिया. हाँ, एक्सप्लेन करो भाई. दिक्कत है बेटा शिवम जी, हमने इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट से हमारा फिंगर्स पर रहना है फेजर, फिंगर्स पर रहना है फेजर, फिंगर्स पर रहना है फेजर. ये करंट का है, ये वोल्टेज क्या है, ये कैपेसिटेंस. मेरा तो ये फ्लक्स है, ये करंट है, ऐसा होना है फिंगर्स. आपका फिंगर्स पर ऊपर अलग अलग बात रहता है, मेरा फिंगर्स के ऊपर पूरा फेजर रहता है. पागल हो गया मैं. देखो माय डियर, तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फेजर? I want the phasor angle TD1 first. Deflection torque TD1 is due to what? TD1 is proportional to 5pc into IECC, and the angle between the cosine angle between these two, 5pc versus IECC. All of you understood this or not? ये सही है नहीं? ये सही है नहीं? पूछ लो सर. हट हो गया सर को. हाँ, हट हो गया, हट हो गया. हट होने वालों को हट होता है. चलो, मजा आ गया ये?
फेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है रे, विदाउट फेजर so hot. इलेक्ट्रिकल पीपल के लिए फेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये लास्ट वाला है। सर मैं नहीं समझा। व्हाट नहीं समझा? आई डोंट अंडरस्टैंड प्रतीक, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ये लास्ट वाला पर तो क्या, मेरा जोक नहीं समझला और एक्सप्रेशन नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। फटाफट प्लीज बताइए। सी हियर, मुझे डिफ्लेक्शन टार्क चाहिए। डिफ्लेक्शन टार्क किसके लिए आ रहा है? डिफ्लेक्शन टार्क इज बिकॉज ऑफ 5pc एंड IECC ना। हाँ एक्सप्रेशन डिफ्लेक्ट, सी टार्क के लिए हमको क्या चाहिए बेटा? बेसिक पावर के लिए VI cos phi चाहिए ना। एक वोल्टेज का एलिमेंट होना चाहिए, करंट का एलिमेंट होना चाहिए, और दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए। तो टार्क के लिए हमको क्या चाहिए? टार्क एक्सप्रेशन कैसा आता है? टार्क एक्सप्रेशन इज बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम ना। हाँ अब्बा देखो शिवम कैसा डायलॉग मारा, इसलिए मैंने शिवम को पकड़ लिया रे, इसलिए मैंने शिवम को पकड़ लिया। देखो ये क्या डायलॉग है, एक का फ्लक्स दूसरों का करंट। क्या नेक्स्ट मूवी प्लान कर रहे हैं क्या? एक का फ्लक्स दूसरा का करंट, ये तो खतरनाक की बात है। एक का फ्लक्स दूसरा का करंट, क्या मीनिंग है उसमें? शिवम जी का ऐसा आइडिया शिवम जी को आता है यार, नॉर्मल लोगों को ऐसा नहीं आता है। एक का फ्लक्स दूसरों का करंट। चलो तो TD1 इज इक्वल टू 5pc IECC cos। सो नाउ मुझे करंट चाहिए। करंट के लिए मैं क्या करूं? ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा सा ये स्लाइड को मैं ऐसा मार रहा हूं, ऐसा मार रहा हूं। चलो जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस माय डियर। सो फर्स्ट, ये फेजर आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। certain situation comes my dear, certain situation comes, a theory question will come at a particular point of time. if you want to answer the theoretical question, definitely आपको phasor में थोड़ा touch होना है। okay चल, first of all I will start the phasor from a reference. The reference I will take current. Which current? I will take the current passing through the pressure coil. फटाफट, I will take current passing through the pressure coil. So this is a current passing through the pressure coil my dear. The reason for the current passing pressure coil, current passing through the pressure coil के रूप में हमको क्या आएगा? फ्लक्स आएगा, फ्लक्स इन द प्रेशर कॉइल। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली। एवरीबॉडी अटेंटिव है क्लास में? एवरीबॉडी अटेंटिव है? एवरीबॉडी अटेंटिव है? प्लीज शो मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं। जस्ट फॉर 10 मिनट्स बेटा, 10 मिनट्स में काम खत्म हो जाएगा। शिवम जी ऐसा गुस्सा देख रहे हैं मुझे, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। शिवम को एक्सप्लेन करना पसंद नहीं है। सर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर आप फेजर के डायग्राम के ऊपर। ये होने के बाद मैं शिवम को पूछता हूं। चलो तो दिस इज IPC एंड 5pc है। प्लीज टेल मी माय डियर, दिस इज प्रेशर कॉइल। व्हाट इज द प्रेशर कॉइल नेचर? आइडियल नेचर। We expect pressure coil ideally as what? Resistive. Yes, voltage. So actually speaking, the VPC has to come here. But is the pressure coil is purely resistive? No, inductive. So let us consider it as purely inductive. For a purely inductive, what should happen? For a purely inductive, the voltage across the pressure coil कैसा होना है? 90 degrees होना है? Yes sir. Simple. This is the voltage across the pressure coil. मजा आ गया? So actually speaking, this angle कितना होना है? 90 degrees होना है. Yes or not? But practically, pressure coil is neither purely resistive not purely inductive. That's why this particular phasor diagram of current का phasor diagram कहाँ आएगा? करंट का phasor diagram 90 degrees नहीं होता, so यहाँ होगा. Understood or not? Very simple की बात है. So this is the IPC and this is the 5pc my dear. मजा आ गया? Actually speaking here 90 degrees होना है, लेकिन 90 degrees नहीं होता है. So this particular angle को मैं बोल रहा हूँ डेल्टा बोल रहा हूँ. Very very important expected question my dear. Expected question आएगा. अब तक क्लियर है? रेडी है? Yes. So voltage leads the current, but we expect 90 degrees. 90 degrees नहीं है ये. And you know the power factor angle.
पावर फैक्टर किसके बीच में होता है बेटा? पावर फैक्टर इज गोइंग टू बी between the VPC and ICC. So here comes the VPC and ICC vector. So this is my ICC vector. Definitely ICC vector should lag na. So this is my power factor angle. So this is my ICC. So this is the ICC, and because of ICC we are also having 5cc. Am I right up to this? Is it clear or not? Is it clear or not up to this? And what is this angle, my dear? Anybody can tell me what is this angle? This angle is nothing but VPC ICC के बीच में angle जो कुछ होता है, that is the power factor angle phi ना. VPC ICC के बीच में जो कुछ होता है, sir, delta is phase angle between supply voltage and pressure coil. Yes. Delta is the phase angle between the pressure coil voltage and the pressure coil current. Delta is a phase angle between the pressure coil voltage and pressure coil current. We expect delta to be 90. अगर डेल्टा 90 है तो ऐसा है डायग्राम, इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव. लेकिन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्योर इंडक्टिव, दैट्स व्हाई लाइक दिस. प्रतीक क्लियर है? प्योर इंडक्टिव. क्लियर 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 सर. इस इन ईडीएम टाइप वी वांट प्रेशर कॉइल इज प्योरली रेस्टोर बट एनर्जी मीटर इज हाईली इंडक्टिव. या फ्लक्स रे शिवम जी, फ्लक्स. अरे आप भी बोला फ्लक्स फ्लक्स बोल के, एक का फ्लक्स दूसरों का करंट, एक का फ्लक्स दूसरों का करंट, एक का फ्लक्स दूसरों का करंट. फ्लक्स चाहिए. फ्लक्स के लिए क्या चाहिए? रेसिस्टर चाहिए, इंडक्टिव चाहिए. हाँ चलो चलो क्लियर है? अब तक क्लियर है? अब तक क्लियर है? आईपीसी 5पीसी, आइडियली वीपीसी यहां होना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 90 डिग्रीज नहीं होता, यहां आएगा. ये एंगल को डेल्टा बोल रहा हूं, एंड पावर फैक्टर हाँ अभी आएगा. हमको क्या चाहिए बेटा? वी वांट द इंटरैक्शन ऑफ 5पीसी एंड आईईसीसी ना. वी वांट द इंटरैक्शन एंगल ऑफ 5पीसी एंड आईईसीसी ना. सो एडी करंट ड्यू टू व्हाट? लिसन डियर स्टूडेंट्स, 5पीसी मिला मुझे. I got 5pc. Everybody is there. Aparna ji, are you there? Juhi Chawla, are you there? Divya ji, are you there? Pratik ji, are you there? हाँ 5pc आ गया. Okay, 5pc मिला. IECC कहाँ से आएगा? IECC के लिए ICC के पास जाना है. ICC is going to create eddy voltage ना. The reason for this eddy IECC कहाँ से आएगा? IECC comes because of this. This comes because of this ना. And this voltage must be 90 degrees to this cos. Induced voltage always 90 degrees. Yes. So this is the 90 degrees angle. So 5cc यहाँ है. So 5cc से exactly 90 degrees we are going to have ECC. All of you understood? So this particular is nothing but what? This is the induced voltage 90 degrees में आएगा. So this is what the eddy voltage induced due to current coil. मजा आ गया? All of you got it? We got already 5pc beta. Now I am searching for IECC. eddy current के लिए eddy voltage आना चाहिए first. This eddy voltage reason कौन है? This eddy का reason कौन है? Current coil. So first eddy voltage due to current coil. So this angle कितना होगा बेटा? This angle होगा 90 degrees. मजा आ गया? Everybody is here. मजा आ गया? फेजर डायग्राम 90 डिग्रीज हो गया. हाँ, दिस इज द एडी वोल्टेज. एडी करंट ऑलवेज लैग्स द वोल्टेज ना. करंट ऑलवेज लैग्स द वोल्टेज. So this is the eddy current IECC, my dear. So this angle let us take alpha. My dear. मजा आ गया? फेजर का मजा एंजॉय कर रहे हैं आप? All of you understood this phasor. एक डायग्राम प्रैक्टिस कर तो दूसरा डायग्राम में आप कर सकते हैं. अभी बताइए, हमको 5pc मिला एंड IECC भी मिला. सॉरी, हमको 5pc मिला एंड IECC ऑल्सो मिला. 5pc मिला, IECC मिला, ये दोनों के बीच में एंगल चाहिए. यस, दिस एंगल बताओ कितना होगा? डायग्राम को देख के बताइए फटाफट. जल्दी. वेरी गुड. 90 प्लस अल्फा
minus delta minus phi. That's it. That's what we have written here. 90 plus alpha minus delta minus phi. So this is the angle. This is 90 plus alpha. ये 90 plus alpha से ये angle को निकालो. ये कितना है बेटा? ये delta minus phi है. ये कितना है बेटा? ये कितना है? This is delta minus phi. So ये 90 plus alpha से delta minus phi निकालो. That's it. Over. So फटाफट लिखेंगे. So TD1 is proportional to phi PC IECC and cosine angle of 90 plus alpha minus delta minus phi. Understood, my dear? All of you understood, my dear? जूही चावला चले गए, अपर्णा जी है, द्विवेदी है, शिवम जी है. Understood? Similarly, I am giving the slide for you. I am not explaining. The second slide, 90 plus alpha, if you do it, second slide, this is second slide. Second slide I am not explaining. So this is due to what? This is due to what? Second slide. Phi EC TD1. This is TD1. TD2 कितना है? Phi CC and IEPC ना? Phi CC and IEPC. Phi CC and IEPC. Time waste मत करो. So phi CC and IEPC. So this is going to become cos 90 plus alpha plus delta minus phi आएगा. All of you understood, my dear? So this is the deflection torques. Now if you take the resultant deflection, TD is proportional to TD1 minus TD2, my dear. And if you simplify by applying some mathematics, and if you simplify, finally क्या आएगा आपको? मैं बता रहा हूँ आपको. If you observe this particular thing, actually speaking here, if you simplify this, what you are going to get finally? You are going to get finally the deflection torque is proportional to VL, that is VPC आएगा. Actually this 5 PC के place में 5 PC is because of IPC, IPC is because of VPC, and this is 5 CC is because of ICC. Sine of delta minus phi का expression आएगा. So this is what you are going to get. All of you understood, my dear? So please make a note of this particular one. All of you understood, my dear? And this is nothing but your watt meter का reading ले सकते हैं, power का reading ले सकते हैं. Yes. So the power का reading. So what you are getting, my dear, here, let me take one more slide. So this is the one expected question here. Actually ये derivation मैं कर सकता हूँ, इसका derivation का बहुत lengthy हो जाएगा derivation, इसलिए मैं avoid कर रहा हूँ. Is it clear? If you take TD1 minus TD2, that means this expression minus this expression, okay? And in the place of 5PC, why? Because 5PC is because of VPC and 5CC is because of ICC. And if you do this mathematics, you are going to get this. So this is the measured power. So the measured wattmeter reading, my dear, the measurement value that you are getting is what, my dear? VPC, ICC, sine of delta minus phi. This is practical. But realistic क्या होना है? Realistic क्या होना है? VPC, ICC, realistic क्या होना है बेटा इधर? The delta must be how much? Realistic. Yes. Very good, very good, very good. This must be क्या है? हाँ, शिवम जी, that is a measured value. हाँ. So this will be what? Sine 90 minus phi. So this is the ideal. Sine 90 minus phi is equal to cos ना? So true value ये है. So true value is
VPC ICC cos phi. So this is the true value, my dear, and this is the measurement value, my dear. So there is a possibility of percentage error. This percentage error is due to what, my dear? This percentage error is due to pressure coil inductance effect, na? Always remember, my dear, whether it is a dynamometer, wattmeter, whether it is a dynamometer or energy meter, error is always majorly due to pressure coil only. Pressure coil will expect purely resistive, not possible. Purely inductive, वही तो not possible. Neither resistive nor inductive, ये dancing angle आएगा, इसकी वजह से हमको error मिलेगा. One error is due to pressure coil connection there, and another error is pressure coil inductance here. मजा आ गया? मजा आ गया? चलो. So what is the percentage error? The percentage error is equal to measurement value minus true value by true value into 100. You understand? And this expression simplify करो, आपको measurement आएगा. That's it. This is one area. Dear aspirant, जितने लोग सेशन को देख रहे, dancing coil, जितने लोग ये सेशन को देख रहे, ये area is expected question. In energy meter, error expected question. Of course, theoretically, I have kept some slides. Okay, there are certain errors called creeping error. There are certain errors called frequency error. There are certain errors called temperature error. आप पढ़ सकते हो. That is not a matter. I've kept the slides in this particular PPT only. आप पढ़ सकते हो. लेकिन the most cream of energy meter is this. Now, and the most important point, one more expression I want to tell you. Now, what is happening? The functionality of the braking magnet, that also I want to tell you. Sir, what about this? Sir, every instrument में deflection torque है, controlling torque है. Indicating instrument से हमको deflection torque है, controlling torque है. लेकिन energy meter में हमको क्या आ गया? देखो ध्यान से सुनो बेटा. All measuring instrument में deflection torque makes the pointer to move, controlling torque makes the pointer to move like this, so that there is a stability oscillation and slowly settles, right? एनर्जी मीटर का कॉन्सेप्ट क्या है? एनर्जी मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क है, ऊपर से एक फ्लक्स, नीचे से एक फ्लक्स. शिवम जी बोल रहे एक का फ्लक्स दूसरा का करंट, एक का फ्लक्स दूसरा का करंट, एक का फ्लक्स दूसरा का करंट. इसकी वजह से क्या हो रहा है? फिर क्या हो जाए? टार्क जनरेट हो रहा है. टार्क जनरेट हो गया. टार्क जनरेट हो रहा है. एल्यूमिनियम डिस्क इज रोटेटिंग. डू यू अंडरस्टैंड माय? एल्यूमिनियम डिस्क इज रोटेटिंग. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नंबर ऑफ रोटेशंस आर रिलेटेड टू व्हाट? IPC and ICC. This number of rotations are related to what? VPC and ICC. This number of rotations are related to what? Power consumed by the load. That's what the energy. Energy is nothing but power consumed over a period of time. That's it. मजा आ रहा है आपको? This aluminum disc is rotating. The speed of rotation. The speed of rotation is related to what? The torque. The torque is proportional to what? VI cos phi. What is what? Power. That's why energy is equal to power into time. You understand? But where is the braking? What is the purpose of braking? Sir, there should be a constant number of revolutions, right? That's why there is a braking magnet. If you see this braking magnet, this is the braking magnet. Try to understand this picture. This braking magnet is nearest to this spindle. Okay, so the distance from the spindle, this is a spindle, my dear. So if you see the main picture, इधर गया रे picture. ये है main picture. Now if you see, this is the disc and this is the braking magnet. There is a gap. Okay, so that picture only I am taking here again. So if you see this picture, so this is a braking magnet which is a permanent magnet, and there is a north pole, south pole. Here say magnetic flux RA, and this is our aluminum disc attached to the spindle, and इसके ऊपर pressure coil है, इसके नीचे current coil है. So this is a current coil, this is a pressure coil. वो बात हो गया. Because of this pressure coil, current coil, flux, current flux, हमको deflection torque आ चुका है. Then controlling torque चाहिए ना?
कंट्रोलिंग टॉर्क के प्लेस में हियर ब्रेकिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क के प्लेस में कौन है इधर, ब्रेकिंग टॉर्क है। लेकिन सुनो बेटा, कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क की वजह से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पॉइंटर स्टडी होता है, लेकिन हियर डिफ्लेक्शन टॉर्क एंड ब्रेकिंग टॉर्क की वजह से स्पीड कांस्टेंट होता है, ए कांस्टेंट स्पीड विच इज रिलेटेड टू द एनर्जी। समझ में आपको? डिफ्लेक्शन टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मेक्स द पॉइंटर टू कम टू स्टडी, but here deflection torque and braking torque makes that aluminum disc to rotate with a constant speed n according to the power consumed। मजा आ रहा है समझ में आपको सब लोगों को? ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिफ्लेक्शन टॉर्क, करंट टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। इधर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है, इधर ब्रेकिंग टॉर्क है। So this the braking torque. Then what happens? See here, this aluminum disc is rotating na, so this magnetic flux cuts na. When this magnetic flux cuts, this phi coming from the magnet cuts this aluminum disc na. When a metal disc is rotating under a magnetic flux, क्या होता है उसमें? EMF generate होता है, इसमें EMF generate हो गया। So this EMF is proportional to number of revolutions first. The EMF generated in the aluminum disc is proportional to number of rotations. Why? Because the more is the speed of rotation, the more is the speed of rotation, the more will be the EMF generated in this aluminum disc. And most important, it is also proportional to the flux cutting. The flux cutting. So if you write a common equation, E, okay. So this EM is proportional to the magnetic flux cutting and N. So if I remove this proportionality, I am going to get some constant called K. ये relation इतना important नहीं है, लेकिन इससे एक relation आएगा। So this EMF आएगा, and what is the current induced? There is an eddy current induced. That eddy current induced is equal to EMF induced by its resistance. It is a metal disc, so impedance Z. So EM by Z, so that will become what? K into phi M into N by Z हो गया। समझ में आपको? What is the torque? Braking torque. Braking torque is nothing but force into radius. Force is coming because of the flux. Radius distance is coming here. The distance is R. So this is the distance between the spindle and the magnet. So braking torque is proportional to phi into I into R. So this is a braking torque, my dear. Braking torque का expression है ये. So braking torque is proportional to force into radius. So this is a force into radius. So electromotive force is equal to phi into I into R. So if you say this proportionality some constant K or K dash, so phi, so this is a phi M into I into R. So keep the phi M as it is. I is equal to this K phi M N Z R. So if you see some relation, we are going to get braking torque is equal to K double dash phi M square into N into R by Z. Got it? All of you understood, my dear? So here the most important point, that deflection torque and this braking torque, if we equal, deflection torque we got it and braking torque we got it, and when you make it equal, then finally what we are going to get, number of revolutions happening is directly proportional to the energy consumed. That is a fundamental expression. So by doing the braking torque equal to the deflection torque, braking torque का expression यहाँ से आ गया, and deflection torque का expression हमने पहले ही किया है, deflection torque का expression हम पहले ही किया है यहाँ, this is deflection torque expression यहाँ किया है। तो ये दोनों यूज करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंटीग्रेशन करें तो टाइम से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या आएगा, एनर्जी आएगा। मजा आ गया? दिस n is proportional to E, this n is a number of revolutions. If you remove this proportionality, you are going to get some constant K. So this K is equal to n by E. So this is the most important expression. So this is a number of revolutions of the disk. Number of revolutions of disk in a time. Disk in a time divided by energy consumed
energy consumed in that time, during that time. So if you see, this is what we call as energy meter constant. क्या बोलते हैं उसको? Energy meter constant बोलते हैं. So this is the revolutions by kilowatt hour. This one expression. तो प्लीज मेक ए कैसा आ गया रेफरेंस ये है, यहां से ये आएगा. यस, परफेक्ट. टॉप क्या सर? इफ पावर कंज्यूम्ड इज 0, yes, we expect if power consumed is equal to 0, we expect the aluminum disc should stop, but due to the pressure coil flux disturbances and due to this particular pressure coil adjustments, what happened, there is a small flux may be there, that's why the disc may be rotating slowly even though the power consumed is not there. That slow movement of the disc even though power absence is there, उसको हम बोलते हैं क्रीप बोलते हैं, उसको हम क्रीपिंग एरर बोलते हैं. मजा आ गया? चलो बेटा, वो एरर है. चलो, नाउ लेट अस मूव फॉर सम क्वेश्चंस. रेडी फॉर क्वेश्चंस? फटाफट 2 to 3 क्वेश्चंस करेंगे फटाफट. रेडी 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 रेडी. रेडी है? that n is inversely proportional to r, my dear. The number of revolutions happening is can be controlled by this r. N is inversely proportional to r. From this equation you can understand this n into r this side. If you send this n into r, so if I want only n, r comes this side. If I want only n, r comes this side, that means n is inversely proportional to r. अगर distance reduce होगा, speed increase हो जाएगा. अगर distance is moving away, this r is increasing, the number of revolutions कम होता जा रहा है. The reason because the magnetic flux का interaction. Okay ना? So the more closest it comes, the number of revolutions will be more. If r is less, the n will be more. चलो answer this question better. First option is 690. This is 690. Make it fast. Famous question in Gen exam. एनर्जी मीटर कितना इंपॉर्टेंट है ना शिवम जी. ये मेजरमेंट्स का सब्जेक्ट अगर आपने कोई ना कोई स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी पेपर ओपन करके देखो, एनी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, उत्तर प्रदेश, काश्मीर, गोवा, श्रीलंका, डायू डामन, लक्षद्वीप, कोई स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी पेपर ओपन करके देखो, मेजरमेंट्स में लगभग आपको 12 to 15 क्वेश्चंस मिलेगा. एसएससी जेई में, जिनको एग्जाम में, ट्रांसको एग्जाम्स में, एसएससी जेई में आपको इतना क्वेश्चंस आएगा मेजरमेंट से, मिनिमम 12 to 15 क्वेश्चंस आएगा. गेट में कम आ रहा है वेटेज. चलो आंसर प्लीज. An energy meter is designed to make 100 revolutions. So n is given as 100 revolutions of disk for 1 unit of energy. So unit energy is equal to 1 unit. That means 1 kilowatt hour. Calculate the number of revolutions made by the disk when connected to a load carrying of current is equal to 50 amperes, voltage is equal to 230 volts, and power factor is equal to 0.6 for an hour.
time is equal to 1 hour. Please do it fast. How to do it? So first of all, energy calculate करना है. Energy is nothing but power into time. Power is equal to VI cos phi into time. V is equal to what? फटाफट कर लो बेटा. V is equal to 230 है. Current is equal to 50 amperes है. Power factor is equal to 0.6 है. And time is equal to 1 hour है. This is already hour, but this is in watts. So if you divide by 1000, automatically the units will be converted to kilowatt hour. Am I right? Then the units will become kilowatt hour. All of you understood this conversion? Both important है. Sometimes he will give this in watts or kilowatts. Sometimes he will give this in seconds, minutes. So you have to make conversions. Okay. So अब कितना आएगा check करो बेटा. 230 by 50, 230 into 50 into 0.6. 230 into 50 into 0.6 divided by 1000. So आ रहा है 6.9 kilowatt hour. Am I right? 6.9 kilowatt hour. So for 1 kilowatt hour, 100 revolutions. For 1 kilowatt hour, how many revolutions? 100 revolutions. So for 6.9 kilowatt hour, कितना revolutions होगा? That's it. Answer is 6. कितना number of times से questions आएगा? If you open the Genco book, if you open the Transco book, if you open the JB Gupta book, if you open the AK Sahni book, if you open any state electricity paper, आपको ऐसा questions आएगा. लेकिन इसका background क्या है? इसके बैकग्राउंड में क्या क्या टॉर्क्स है, डिफ्लेक्शन टॉर्क है, ब्रेकिंग मैग्नेट टॉर्क है, वो दोनों का इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद हमको n इज प्रोपोर्शनल टू ई एक्सप्रेशन आएगा. n इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे मिला? डिफ्लेक्शन टॉर्क का एक्सप्रेशन, ब्रेकिंग मैग्नेट का टॉर्क का एक्सप्रेशन, ये दोनों को इक्वल करे तो आपको एक कांस्टेंट स्पीड आएगा एंड दिस कांस्टेंट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू. चलो बेटा, try to answer this question. The disk of a house service energy meter of 230 volts single phase 50 Hz 5 amperes 2400 revolutions per kilowatt creeps at 1 revolution per minute. The creep error of full load of unity power factor is dash as a percentage. Answer please. Answer. See here, what is the data given? Current is 5 amperes. VL is equal to 230 volts. And what is the K? K, energy meter constant. That is 2400 revolutions per kilowatt hour. Unity power factor is equal to 1. So first of all, when time is not given, you can take 1 hour. If you take for a time of t is equal to 1 hour, so what is the energy? Energy is equal to power into time. Power is equal to VI cos phi 230 into current 5 amperes into power factor 1 into 5000 and time is 1 hour. I am taking 1 hour.
So now the units will be kilowatt hour. Okay, so कितना आ रहा है 230 into 5 divided by 1000, 1.15 kilowatt hour. See here, for 1 kilowatt hour, as per this concept, N is equal to K into E. This is a E, right? What is the N? N is equal to K into E. K is given as 2400 revolutions by kilowatt hour. Am I right? And this energy is 1.15 kilowatt hour. And this gets cancelled. कितना आएगा? Into 2400. It is coming 2760 revolutions. This is the actual. Am I right or not? This is the actual I should get. But there is a creep of 1 revolutions per minute. Have you observed this? So actually कितना आना है? So true value is how much? 2760 revolutions. 2760 revolutions. But measurement value कितना होगा? In addition to this 2760, there is a creep of 1 revolution per minute. Creep, that means slow rotation. I told you already. For 1 minute, there is 1 revolution. So for 1 hour, that means 60 minutes, there will be 60 revolutions. Do you understand this logic? That means already that particular aluminum disc, bina power, whenever there is no power also, there is a slow movement of 1 minute, 1 revolution. There is a slow movement of 60 revolutions per 1 hour. ऐसा मीटर अभी हम यूज कर रहे हैं फॉर 230 वोल्ट्स 5 एम्पियर्स फॉर 1 आवर. कितना आ रहा है रिवोल्यूशंस? 2760 आ रहा है एक्चुअल. ये 2760 कहा जाएगा, ऑलरेडी उसमें 60 रिवोल्यूशंस इनबिल्ट है, क्रीप इनबिल्ट है. सो दिस इज विदाउट क्रीप, दिस इज विथ क्रीप. विथ क्रीप क्या होगा? 2760 will be added to 60 revolutions in 1 hour. So this will be coming as 2820 revolutions. There is an error ना, ज्यादा revolutions आ रहे हैं ना. मजा आ गया. सुपर्ब क्वेश्चन. ऑलरेडी वो क्रीप में जा रहा है, ऐसा क्रीप में जा रहा है, ऐसा क्रीप में जा रहा है, उसके ऊपर 2760 revolutions आ गए. You understand? चलो, so अभी क्या होगा परसेंटेज? तो परसेंटेज कैलकुलेट करो. मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाई $2.17 प्लस पॉजिटिव. पॉजिटिव आएगा. प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में आप अगर कंफ्यूज करने के लिए अगर कोई ना कोई सपोज ही हैज गिवन -2.17% हियर एंड दिस इज प्लस 2.17%, व्हाट इज द आंसर नाउ? सपोज यू कैन गिव लाइक दिस आल्सो. आंसर इज सी. ज्यादा होता बिकॉज मेजरमेंट वैल्यू इज मोर. मेजरमेंट वैल्यू इज मोर. ऑलवेज रिमेंबर, क्रीप की वजह से क्या होगा? मेजरमेंट वैल्यू विल बी मोर. Number of revolutions measured is more than the number of revolutions than this. That's why electricity bill more आएगा, ज्यादा आएगा. सर मेरा घर में, शिवम बात कर रहे सारा, मेरा बाथरूम में, मेरा बेडरूम में 0 वाट बल्ब है. जस्ट मैं रात को जाता हूँ, वो केवल 0 वाट बल्ब को ऑन करता हूँ सर, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल तो इतना बड़ा आ गया सर. रीजन क्या है?
आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से आ रहे हैं। चलो थैंक यू माय डियर। अरे फैजान कैसे हो, बहुत दिन के बाद मिला। चलो माय डियर, इनफ फॉर टुडे। मजा आ गया सब लोगों को? हाँ, प्लीज गो थ्रू दिस theory topics. Just I'm not explaining this. I have collected some errors for you, some theoretical information, just some reason for errors. आपको क्या चाहिए वो reasons for errors मैंने explain किया हूँ उसमें। errors in energy meter that also I have explained, थोड़ा theoretical है, आप जा सकते, आप देख सकते हैं। errors are due to phase error, next errors due to creep, errors due to speed, errors due to friction, एंड उसको कैसे एडजस्ट करना वो भी मैंने एक्सप्लेन दिया है, टेक्स्ट बुक का मैटर है। फ्रिक्शनल एरर, उसका एडजस्टमेंट, ओके ना, सब एरर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हूं। क्रीपिंग एरर एंड उसका एडजस्टमेंट, ओके माय डियर, इनफ फॉर टुडे। आई विल यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। ये थोड़ा थ्योरी है भैया, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। क्रीपिंग एरर एडजस्ट करने के लिए वो शेडिंग बैंड रहता है, वो शेडिंग बैंड को एडजस्ट करना है। आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर वो कॉन्सेप्ट मिला। कुछ भी जो कुछ क्रीम है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दो घंटे के अंदर हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, वाटमीटर का क्वेश्चंस भी किया, डीपीपी का डाउट्स भी किया। इतना वैल्यूबल है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना है। लोग कितने, जो लोग सक्सेस होता है ना, जितने जो लोग सक्सेस होता है उसके पास एक ट्रिक होता है, उसको टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे की तरफ से आता है। टाइम मैनेजमेंट करना उसके हाथ में होता है, उसमें फिक्स हो जाता है। तो दे नो हाउ टू इफेक्टिवली यूज द टाइम, दैट्स द। एनी डाउट्स माय डियर? चलो शायद आप सब लोग एंजॉय किया सेशन को। आराम से। अरे एवरीडे आई एम गिविंग रे प्रतीक शर्मा, एवरीडे आई एम गिविंग डीपीपी क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके कल देखेंगे भैया, बहुत लेट हो गया आज। मैं बताता हूं उसको, डीपीपी अपलोड हो जाता है अभी, आज का कल का दोनों का पेपर अपलोड होता है। क्या है डाउट शिवम? एक बार सेंसिटिविटी का सारे फार्मूला लिख दो प्लीज। विच सेंसिटिविटी? नेगेटिव क्रीप।
क्रीप बोलो तो ऑलरेडी स्लो रोटेशन है उसमें, क्रीप बोलो तो ऑलरेडी स्लो रोटेशन है, स्लो रोटेशन के ऊपर आपका मेजरमेंट आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है ना सेंसिटिविटी का? ब्रिज सेंसिटिविटी, वी ब्रिज बाय डेलॉर। और क्या चाहिए? अभिषेक कुमार और क्या चाहिए? शिवम जी और क्या चाहिए? आवाज क्लियर है? आवाज में कुछ एनी चेंज है अभी? मेरा साउंड में कुछ चेंज है? परफेक्ट। विकास सोयंकर, बस है आज के लिए। मजा आ गया ना? थैंक यू वन एंड ऑल, लव यू ऑल। कल मिलेंगे और एक सेशन से। कल का सेशन इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स है, सीआरओ, क्यू मीटर, डीवी में। अब वो एरर्स में मिला आपको शिवम जी, आपको मैंने पूरा एरर्स में लिख दिया। पूजा I have given that notes, please go through that. Phantom loading, shading band adjustment, everything I have mentioned over there. Okay, enough. Oh.